Hi guys. So let's discuss some practice questions from the chapter A Letter to God. तो ये बेसिकली एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे. सो चलो लेट्स स्टार्ट. What did Lencho hope for? So Lencho hoped for a good rain as it was very much needed for a good harvest. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? So Lencho compared the raindrops with new coins because they were promising him a good harvest resulting in more prosperity. बारिश आएगी, अच्छी खेती होगी, ज़्यादा पैसे कमाएंगे, मतलब बारिश की बूंदें नए सिक्कों की तरह. ऐसा कुछ कंपैरिजन हम कह सकते हैं. How did the rain change and what happened to Lencho's fields? So the rain changed into hailstones as a strong wind began to blow and huge hailstones began to fall along with the rain. तो बारिश बर्फ में बदल गई, ओले पड़ने लगे. All the crops in Lencho's field got destroyed because of the weather conditions. What were Lencho's feelings when the hail stopped? So he was filled with grief after the hail stopped, as everything was ruined and there was nothing that he could feed his family with. He could see a bleak future for him and his family. तो अब सब कुछ स्नो से ढका हुआ था, सब फसल बर्बाद हो गई थी, उसके पास अपने खाने के लिए, अपने परिवार को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसे बहुत धुंधला, बहुत सैड फ्यूचर नज़र आ रहा था. एंड ही वॉज वेरी सैड आफ्टर द hail stopped. Who or what did Lencho have faith in and what did he do? So Lencho had a firm faith in God. भगवान में विश्वास था. He believed that God sees everything, even what is deep in one's conscience, and helps everyone in one's problem. He wrote a letter to God demanding him 100 pesos to sow his field again. तो उसे यही पता था कि भगवान सबको देख रहे हैं, वो सबकी मदद करते हैं. एंड उसने एक लेटर लिखा कि मुझे प्लीज़ 100 पेसोस दे दो ताकि मैं फिर से अपने खेत में बीज बो सकूं. So who read the letter? The postmaster read the letter. What did the postmaster do after reading the letter? So postmaster laughed when he read Lencho's letter, but soon he became serious and he was moved by the writer's faith in God. He didn't want to shake Lencho's faith, so he decided to collect money and send it to Lencho on behalf of God. तो उन्हें बहुत शॉकिंग लगा एंड प्लेजेंटली शॉकिंग लगा कि इतना विश्वास है किसी को भगवान में. एंड उन्होंने डिसाइड किया कि यार ये विश्वास टूटने नहीं देना है, मैं पैसे इकट्ठा करूँगा एंड मैं इस इंसान को पैसे नहीं दूंगा. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? No, Lencho was not surprised because he believed God will help him. उसने मदद मांगी थी तो उसे लगा मदद तो आनी ही है, भगवान ना थोड़े ना बोलेंगे. What made Lencho angry? So there were only 70 pesos in the envelope, whereas Lencho had demanded 100 pesos. तो ये जो डिफरेंस था अमाउंट में, इससे ये देखकर उसे गुस्सा आया. Who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? He has complete faith in God, as he is instructed that God knows everything and helps us in our problems. तो हम कुछ sentences quote करेंगे टेक्स्ट बुक में से. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. He wrote to God on the envelope, and God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो इन सेंटेंसेस से हमें उसका एक्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है वो दिख रहा है. Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? So postmaster sends the money to Lencho in order to keep Lencho's faith in God alive and firm, as he was completely moved by it. उन्हें बहुत शॉकिंग लगा कि यार क्या फेथ है इस बंदे का. And when postmaster reads the letter of Lencho to God, he becomes serious and does not want to shake his faith and decides to answer the letter. He gathers money with the help of his post office employees and friends on behalf of God and signs the letter God so that Lencho's faith does not get shaken. अब वो बताता कि मैं पोस्टमास्टर हूँ, तो लेंचो का विश्वास भगवान में टूट जाता कि भगवान तो है ही नहीं है, उन्होंने मदद की नहीं. तो इसलिए उन्होंने गॉड ही साइन किया, क्योंकि उनका मेन पर्पस यही था कि इंसान का भगवान में जो विश्वास है वो नहीं टूटना चाहिए.
Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? तो नहीं, he did not try to find out because he had never suspected presence of God and he had complete faith in God. भगवान से पैसे मांगे, भगवान नहीं भेजे, मतलब इसमें पता क्या करना है, उसके लिए ऐसा ही था ना. He could not believe that it could be anybody else other than him who would send the money. And his faith in God was so strong that he believed he had sent money to him in his problem. Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? तो लेंचो को लगता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने बाकी के 30 पैसोज हैं वो चुरा लिए, बिकॉज उसने 100 मांगे थे और लेटर में से 70 थे. सो ही अज्यूम्स दैट दे आर स्टोलिंग द मनी. अब इसमें आयरनी ये है कि जिन लोगों पे ये चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है, जिसे सस्पेक्ट कर रही है, वो एक्चुअली लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं एंड हु हैव ट्राइड टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड. Are there people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो इनमें से क्या आपको लगता है लेंचो को डिस्क्राइब करता है? तो लेंचो जैसा इंसान ढूंढना काफ़ी मुश्किल है बिकॉज ही इज़ अनक्वेश्चनिंग. वो क्वेश्चन नहीं कर रहा गॉड के एक्सिस्टेंस को, या ही डज नॉट क्वेश्चन इट, एंड ही इज़ अ नेव, वेरी इनोसेंट है kind of a person. He is not stupid. If he doesn't know who has sent him the money or a letter, will reach God without any address. It's Lencho's faith in God. In real world, people are selfish and greedy, and Lencho is totally lovable and different. तो आजकल की दुनिया में तो लोग लालची होते हैं, सेल्फिश होते हैं. वो ऐसा नहीं है, वो काफ़ी प्यारा है, बट वो थोड़ा नेव एंड अनक्वेश्चनिंग है. He does not question things. He accepts them as he is told. There are two kinds of conflicts in the story. एक ह्यूमन एंड नेचर के बीच में, दूसरा ह्यूमंस अमंग्स देमसेल्व्स. तो इसे कैसे दर्शाया गया है? तो हम अगर ह्यूमन एंड नेचर की बात करें, सो इट्स इलस्ट्रेटेड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप बाय द हेल स्टॉर्म, एज लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड रेन टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, एंड दैट वॉज द ओनली होप ही हैड फॉर हिज अर्निंग. ही वर्कड सो हार्ड टू फीड हिज फैमिली, बट नेचर टर्न वायलेंट एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. तो ये कॉन्फ्लिक्ट है नेचर और इंसान के बीच. और अगर इंसान के आपसी कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें, तो द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स एंड स्टाफ लेंट लेंचो मनी दैट लेंचो डिमांडेड फ्रॉम गॉड. अब ऑल्दो दे डिडंट नो लेंचो, उन्हें पता भी नहीं था ये लेंचो कौन है, ये बस उन्होंने लेटर पढ़ा और उन्होंने सोचा कि हम इसे पैसे देंगे. अब लेंचो ऑन द अदर हैंड ब्लेम देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, कॉल देम अ बंच ऑफ क्रूक्स. तो दिस शोज दैट एक आदमी को दूसरे आदमी पे विश्वास है ही नहीं, एंड आपस में ही इतना कॉन्फ्लिक्ट है. There are several names in different parts of the world for storms depending on their nature. तो यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं एंड हमें ब्लैंक्स भरने हैं with their description. तो जैसे a violent tropical storm in which strong winds move in a circle is basically a cyclone. An extremely strong wind is a gale. A violent tropical storm with a strong wind is a typhoon. A violent storm whose center is a cloud in the shape of a funnel is a tornado. A violent storm with very strong winds, especially in the West Atlantic Ocean, is a hurricane. And a very strong wind that moves very fast in a spinning movement and causes a lot of damage is a whirlwind. आपको एग्जैक्टली याद नहीं होना चाहिए, बट आपको एक अंदाज होना चाहिए कि क्या क्या है, किसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है. हमें वो सेंटेंसेस मैच करने हैं विद द मीनिंग ऑफ होप इन कॉलम बी. तो इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है. सो विल यू गेट द सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज? आई होप सो. तो इसका मतलब है थिंकिंग दैट इट वुड हैपन, प्रेइंग कि हाँ काश ये हो जाए. इट मे और मे नॉट हैपन, है ना. हैव हैपन मतलब पहले से हुआ हो ना हुआ हो. आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस, बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग. तो showing concern that what you say should not offend or disturb another person, the way of being polite. I hope you don't mind. तो इसमें होप है कि पोलाइटनेस, एक जो हम अगर कर्टियस वे में बात करते हैं, सो वी यूज दिस सेंस ऑफ होप.
The discovery will give hope to HIV or AIDS sufferers. तो a feeling that something good will probably happen, एक hope जो होती है कि कुछ अच्छा होगा वो. We were hoping against hope that the judges would not notice our mistakes. तो wishing was something very unlikely to happen, और मतलब ये होने की चांसेस बहुत कम है, बट हम बस उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा हो जाए, जजेस हमारी मिस्टेक्स ना देखें. I called early in the hope of speaking to her before she went to school, wanting something to happen, although it is quite possible. मतलब अगर स्कूल जाने के काफ़ी पहले फ़ोन किया है तो पॉसिबल है कि हाँ बात होगी, तो I was just hoping कि बात हो जाए. Just when everybody had given up hope, the fisherman came back 7 days after the cyclone. So this hope is like you stop believing in the good thing that will happen. You give up hope. More context में. Now join the sentences below using who, whom, whose, which as suggested. I often go to Mumbai. Mumbai is the capital of India. To which? So I often go to Mumbai, which is the commercial capital of India. My mother is going to host a TV show on cooking. She cooks very well. Who? My mother, who cooks very well, is going to host a TV show on cooking. These sportspersons are going to meet the president. Their performance has been excellent. Whose use करना है? So these sportspersons whose performance has been excellent are going to meet the president. Lencho prayed to God. His eyes see into our minds. Whose? So Lencho prayed to God whose eyes see into our minds. This man cheated me. I trusted him. Whom? So this man whom I trusted cheated me. Find sentences in the story with negative words which express the following ideas emphatically. The trees lost all their leaves. So not a leaf remained on the trees. Negative word use करना है. No, not, cannot, ऐसे जो no का sense थे. But meaning same रहना चाहिए. The letter was addressed to God himself. It was nothing less than a letter to God. The postman saw this address for the first time in his career. Never in his career as a postman had he seen that address. In pairs, find metaphors from the story to complete the table below. Try to say what qualities are being compared. तो अगर क्लाउड है, वहाँ पे मेटाफर है ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड. तो यहाँ पर जो ह्यूज या जो मास है माउंटेन्स का, उसको वो एक फीचर है जो हम कंपेयर करें क्लाउड्स के साथ. रेन ड्रॉप्स को पॉइंट्स के साथ कंपेयर किया गया है. मतलब द मनी दैट अ गुड क्रॉप विल ब्रिंग बिकॉज ऑफ द रेन, ये कॉन्टेक्स्ट में है. हेल स्टोन्स को फ्रोजन पर्ल्स के साथ, तो ब्राइटनेस ऑफ द पर्ल्स देयर वाइट एंड शाइनिंग जैसे हेल स्टोन्स थे. लोकस्ट को प्लेग ऑफ लोकस्ट का कंपेयर किया गया. बेसिकली इट्स एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड्स वेरी रैपिडली एंड लीव्स मेनी पीपल डेड. लेंचो को एक ऑक्स ऑफ अ मैन कहा गया है. मतलब ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग जस्ट लाइक ऑक्सेंस आर. ऑक्सेस वर्क इन द फील्ड्स, तो वो उसी से कंपेयर किया गया. ऑलराइट, आई होप ऑल questions are clear. Bye-bye.